डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम अहमद है और मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। आप अपने स्कूलिंग करियर में फ़िज़िक्स पहली बार पढ़ रहे हैं। ये फ़िज़िक्स ग्रेड 9 के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। फ़िज़िक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, engaging and a little bit challenging subject. The word physics comes from Greek language that means knowledge of nature. Physics is one of the most fundamental science disciplines, and its main goal is to understand how the universe behaves. Physics is about asking fundamental questions and trying to answer them by observing and experimenting. And you know that the same definition holds for science. Science is defined as the knowledge gained through observation and experimentation. It means physics is one of the most fundamental branch of science. Historically, science was known as natural philosophy. With the passage of time, it had been broken down into two disciplines: biological sciences, dealing with living things, and physical sciences, dealing with non living things. Physics belongs to physical sciences. डियर स्टूडेंट्स, इस पेज पे आपको कुछ साइंटिस्ट की इमेजेस नज़र आ रही हैं। ये गैलीलियो हैं और ये न्यूटन हैं। इनको फ़िज़िक्स की फील्ड में पायनियर्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फ़िज़िक्स की बुनियाद रखी। इसी तरह ये फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं और ये स्टीफन हॉकिंग। वो साइंटिस्ट जो फ़िज़िक्स की फील्ड में काम करते हैं उनको फ़िज़िसिस्ट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, before formally starting the physics, let's have some overview of the prescribed book for grade 9. This is the content page, and there are 9 units which you go through this session. You see that there are 9 units along with their headings. For this current second term which is going on, we would only discuss the first 3 units. Unit number 1, physical quantities and measurement. Unit 2, kinematics. Unit 3, dynamics. So let's start with unit 1, named as physical quantities and measurement. What is physical quantities? The physical quantities are the quantities which are measurable. For example, length, mass, time, temperature, etc. And the basic job in physics is to have measurement of physical quantities and express them in numerical form. Dear students, you see a very simple definition, one line definition for physics. In physics, we study matter, energy, and their interaction. It means in physics, we study matter, energy, and the interaction between them or relation between them. Let's analyze this definition. The first term is matter. Matter is simply defined as anything which has mass and occupies space. Matter is found in different shapes, for example, solid, liquid, and gas. Energy is refined form of matter. Energy is a property that matter has. Similar to matter, energy is also found in multiple form. For example, heat energy, light energy, sound energy, etc. etc. If body is moving, it has kinetic energy. If a body is lifted up from the surface of earth, it possesses potential energy. Energy is always associated with matter, means both are very closely related to each other. Dear students, the interaction of matter and energy can be understood by the following example. Imagine if you add some energy, heat energy, to an ice cube made of water, it turns to liquid water. And if you add even more energy, it becomes gaseous water.
और स्टीम। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि वाटर जो मैटर है और एनर्जी, हीट एनर्जी, किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेशन डेवलप करते हैं और किस तरह मटेरियल एनर्जी को रिस्पांस देता है और एनर्जी किस तरह मटेरियल के साथ एसोसिएट होती है। तो इस तरह की बातें हम फिज़िक्स में बार बार डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ बात हम कर लेते हैं फ़िज़िक्स की डेली लाइफ में यूज़ या फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस के। The rapid progress in science during recent years has become possible due to the discoveries and inventions in the field of physics. Most of the technologies of modern society throughout the world are related to physics. For example, a car, which is very common thing, is made on the principles of mechanics, and a refrigerator, which is a very common household object, is based on the principle of thermodynamics. And you would soon see that mechanics and thermodynamics are branches of physics. Dear students, in our daily life, we hardly find a device where physics is not involved. Consider pulleys. ये आपको इसकी इमेज नज़र आ रही है. Pulleys are used to lift heavy loads. Electricity is used not only to get light and heat, but also mechanical energy that drives fans and electric motors. Consider means of transportation such as car and aeroplanes, domestic appliances such as air conditioner, refrigerator, vacuum cleaners, washing machines, and microwave oven. Similarly, the means of communication such as radio, TV, telephone, computer, and mobiles are the result of application of physics. These devices have made our lives much easier, faster, and more comfortable than the past. For example, think of what a mobile phone smaller than our palm can do. It allows us to contact people anywhere in the world and to get latest worldwide information. We can take and save pictures, send and receive messages of our friend. We can also receive radio transmission and can also use it as a calculator. Dear students, ये जो ऊपर कुछ हमने बातें डिस्कस की, तो ये शो कर रही है कि फ़िज़िक्स जो है वो हर जगह यूज़ होती है. फ़िज़िक्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है. आप अपने घर देख लें, आप बाहर देख लें, हर जगह फ़िज़िक्स की कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस और फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस आपको हर जगह नज़र आएगी. ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ फ़िज़िक्स की यूटिलाइजेशन या फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस हम ना डिस्कस करते. डियर स्टूडेंट्स, physics is an ancient and broad field of science. Physics is itself divided into a number of sections or branches. This division is done mainly for convenience, and the branches of physics do overlap. In your course, the following branches are given, although much more divisions are there. यहाँ पे कुछ फिज़िक्स की ब्रांचेस के नेम आप देख रहे हैं. मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, जियोफिज़िक्स. अभी हम वन बाय वन हर ब्रांच को डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स नेम्ड एज मैकेनिक्स. इसको सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं? It is the study of motion of objects, its causes and effects. Dear students, you see that everywhere there are movement of objects is there. For example, car is moving, a person is walking, running, or an aeroplane is flying. The basic reason or basic cause behind this movement of object is the force. So motion of object, its causes, and what is meant by the effect. You know, the body which is moving has different effect
than a body which is at rest. You would later see that mechanics is further subdivided into two divisions: kinematics, which includes in unit 2, and dynamics, which you would learn in unit 3. Heat. Heat is also known as thermal energy. It's a form of energy which flows from hot body to cold body. So nature of heat means heat is or it is basically in a form of wave. Modes of transfer of heat means how the heat goes from one point to another point, how it flows. So there would be three modes of transfer of heat: conduction, convection, and radiation. And what is meant by effect of heat? Heat is having a number of demonstration in your life in which you can easily see that heat has effects on the material. For example, heat can melt the object, heat can boil the water, etc., etc. Sound. It is also known as acoustic energy. It deals with physical aspects of sound waves, their production, properties, and application. Sound is very common form of energy, and it is basically a wave. It it is generated by speakers, and it goes listener or production of sound. Mean sound is always produced by some if body is vibrating. There are properties of sound, and you would see that there are different application of sound in different field of life. Light or optical energy. It is the study of physical aspect of light, its properties, working, and use of optical instrument. Again, light is a wave. It has certain properties. For example, light is reflected, refracted, scattered, dispersed, diffracted, polarized. ये आप आगे डिटेल से पढ़ते जाएंगे. Light has some optical instruments. For example, mirror, lenses, microscopes, telescopes, cameras, etc., etc. Next is the electricity and magnetism. It is the study of charges at rest and in motion, their effects, and their relationship with magnetism. It is a very common form of energy, and we can't imagine a life without electricity. Dear students, आप इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्जेस हैं और प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनसे फेमिलियर हैं. यहाँ एक और चीज़ नोट करें कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में एक रिलेशन है. इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ चेंज टू मैग्नेटिज्म, and in return magnetism can generate electricity. Atomic physics. Atomic physics is one of the branches of physics, as you know. It is defined as the study of structure and properties of atoms. Dear students, atom is the basic building block of the all matter. It is the structural and functional constituent unit of ordinary matter. As far as structure of the atom is concerned, तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और प्रपोज किया. इनमें से दो फेमस साइंटिस्ट आप केमिस्ट्री के कोर्स में पढ़ेंगे. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है और बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स का मतलब ये है कि एटम क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मटेरियल की, तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डायरेक्टली किस पे बेस करेंगी? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट पे, यानी कि एटम्स पे. आप सब एटम के शेप से या एटम के स्ट्रक्चर से फेमिलियर हैं. एटम को
यूजली कहा जाता है कि इट हैज़ सेंट्रल पार्ट विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस and it is surrounded by the orbits in which electrons are revolving around the nucleus. Nuclear physics. It deals with the properties and behavior of nuclei. Nuclei is the plural of word nucleus. Nucleus is for one and nuclei is for two or more. So nuclear physics deals with properties and behavior of nuclei and the particles within the nuclei. अभी मैंने आपके साथ एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है और न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट होता है और न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. Although many more सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, लेकिन इस लेवल पे इस ग्रेड 9 और यानी मैट्रिक तक आप सिर्फ यही दो पार्टिकल जो हैं वो डिस्कस करते हैं और जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. प्लाज्मा फिजिक्स. It is the study of production properties of ionic state of matter, that is fourth state of matter. अभी तक आपने पढ़ रखा है कि एटम जो है ये मटेरियल जो है वो थ्री फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अभी आपने मैटर की एक और फॉर्म डिस्कस कर ली जिसको प्लाज्मा फिजिक्स. प्लाज्मा मैटर की स्पेशल फॉर्म है and it is ionized gas consisting of approximately equal number of positively charged ions and negatively electrons. प्लाज्मा जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए it requires very intense and severe conditions. For example, it exists at very high temperature. साइंटिस्ट कहते हैं कि इस यूनिवर्स का more than 99% पार्ट जो है वो प्लाज्मा है और लेस देन 1% टोटल यूनिवर्स जो है वो ऑर्डिनरी मैटर है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में. इससे आपको प्लाज्मा की अबंडेंस का अंदाज़ा हो जाएगा. जियोफिजिक्स. इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. इट इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच जॉइनिंग जियोलॉजी एंड फिजिक्स. दैट इज़ we apply principles and laws of physics to study geology. That's why it is called geophysics. Dear students, आज की डिस्कशन में हमने फ़िज़िक्स को इंट्रोड्यूस किया, उसकी कुछ डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस डिस्कस की और फिज़िक्स की जो ब्रांचेस है उनको हमने डिस्कस किया. उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. आप इसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप इसको रिपीट करते जाएं. तो सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट लेक्चर. ओके, गुड लक.